सिंपल लिमिट हैव तो जस्ट यू कैन हैव द 5 मिनट भी होते थे, ठीक है। वही डायरेक्टली तुम इसको पाउडर किया तो इससे ग्रीन कॉफ़ी बनेगा। ग्रीन कॉफ़ी में तुमको 94% ऑफ मेडिसिनल वैल्यू है अराउंड द वर्ल्ड। So it's officially day 2 at Coorg, and yesterday went in, just resting and reviving because I was so tired. So today we'll be mostly covering Omkareshwar Temple and Dumbari Elephant Camp. So yes, let's get started. Arabica is purely known as instant coffee. For Okay. example, limit of have the just you can have the taste at ripe होने के बाद वो रेड कलर में टर्न हो जाते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट सीजन होते हैं, वो दिसंबर से मार्च तक हम हार्वेस्ट करेगा। उसके बाद वो सुखाना पड़ेगा। वो सनराइज से 10 दिन चाहिए उसको सुखाने को। सुखाने के बाद उसका कलर ब्लैक बनेगा। ब्लैक बनने के बाद उसका स्किन आउट करने पड़ेगा, स्किन रिमूव करने को वो मशीन से करते हैं। वो मशीन लैंग्वेज में पल्पिंग बोलते हैं। पल्प होने के बाद इसका अंदर तुमको ग्रीन कलर 5 मिनट बीन मिलते हैं तुमको। वो ग्रीन कॉफ़ी बोलते हैं तुमको, यही तुमको ग्रीन 5 मिनट बीन होते थे, ठीक है। वही डायरेक्टली तुम इसको पाउडर किया तो इससे ग्रीन कॉफ़ी बनेगा। ग्रीन कॉफ़ी में तुमको 94% ऑफ मेडिसिनल वैल्यू है अराउंड द वर्ल्ड। वो तुमको डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है तुमको। और इसमें टेस्ट नहीं है, नहीं तो स्मेल भी नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर द सेक ऑफ मेडिसिनल वैल्यू पी सकते तुम, ठीक है। और यही कॉफ़ी को हम इस मशीन से डालते हैं। ये मशीन फिल्टर कॉफ़ी बनाने का रोस्टिंग मशीन होते थे। इसमें इसके अंदर एक टर्बाइन होता है। टर्बाइन 360 डिग्री में रन हो जाता है। और टर्बाइन के नीचे एक बर्नर भी आता है, वो है सिलेंडर से जोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मशीन रन होने के बाद ये क्या करेगा, सभी साइड में रोस्टिंग प्रोसेस बनेगा। रोस्टिंग होने के बाद तुमको फिर ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ब्लैक ब्राउन एंड गोल्ड कलर में आते हैं। अभी तुमको दिख रहा है ना, ये ऑर्गेनिक नेचुरल बीन होते हैं तुमको, रोस्टेड बीन। यही बीन को हमको टाइमिंग है, आधा रोस्टिंग किया तो हाफ रोस्टिंग किया तो वो 30 मिनट्स टाइम लगेगा उसका नॉर्मल कॉफ़ी बनेगा। उसका तुम फुल रोस्टिंग चाहिए तो 1 आवर 20 to 30 मिनट्स चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनेगा। उसको डिटेक्ट करने का ये तुमको डिवाइस होते हैं, डिटेक्ट करने का। इसके कैसे हम जज करके हम शट डाउन कर सकते हैं। So now I've come to the Mountain View Cafe Plantation Drive, where it's like 200 per person along with a guide, and they will take you along the coffee plantation drive. And there are various types of coffee plants over here, and apart from coffee there are other plants too, because as you very well know, Coorg is very famous for coffee as well as spices. And yes, that was it. And apart from this, they tell you about the types of coffee present here, Arabica and Robusta something. And yes, this was amazing, as it was a very eye-opening tour, because we were not aware about the coffee types, and we usually prefer the instant coffee, and Karnataka is known for the filter coffee. So they gave us a lot of insights about the coffee and all the pepper, cardamom spices. And they told us that the Coorg area contains very fertile soil, which is like suitable for growing these plants. And it contains a combination of red and black soil, so they give you a gist of everything, ranging from the history to the geographical conditions of this place. And I am really, I would recommend you to come to this place. It is on a bit expensive side, but you also get a complimentary coffee drink, and you can try other types of coffee too. And yes, I won't, give all the information about this. I'll recommend you to visit this place, as it is very insightful and you will get to learn a lot of things. Also, they have their own shop where you can buy coffee and other beauty related products and spices. So yes, it's a must visit. And
yes, let's get to the next destination. I think so we'll be going to Abbey Falls. So let's go. So instead of Abbey Falls, we have come to Madkeri Fort, and I think so within this Madkeri Fort only there's a museum. So let's first discover this place, explore it, and then maybe we'll go to Abbey Falls. So let's go. Now we have come to the museum where it basically captures the culture and heritage of our Indian country, and I am proud to be an Indian. Our country was so rich culturally, so it is a must place to visit. Again, here it's like for adults the ticket charges are for 10 rupees, and for kids it is for 5 rupees. So this is quite economical. Come to Abbey Falls, and I'm super excited because I love waterfalls and the scenic beauty is amazing. And let's go and explore this waterfall. Chalo. So I encountered that this place is not worth the hype. It was very crowded, and वो waterfall में जाने को नहीं मिलता है. ऐसा एक व्यू पॉइंट टाइप स्टेज टाइप बना दिया है जहाँ से आपको दूरदर्शन करना पड़ेगा ये फॉल्स का. एंड अभी अपहिल चढ़ना की बारी है, बैंड बज चुकी है. तो एंड इधर का टिकट 10 rupees per person है, but it's not worth the hype. So now we have come to check out the Raja's tomb, and here the entry fees is around 10 per person, which is like again quite economical. So let's explore this place. Videography and photography was prohibited in the tomb area, so I could not capture anything. But I would like to say that this is also not recommended place to visit, and I would suggest you not to add it in the itinerary, as I did not find it so great. So guys, now we have finally come to Sri Omkareshwara temple. So we'll explore this fast, and this would be our last point. So let's explore it. So this is a Omkareshwar temple. There is a dress code to be followed, and I am displaying the same. So videography and photography was prohibited inside the temple premises. It was very peaceful, and I did not feel like coming out because I was able to connect with the higher divine self. So yes, it's a must visit.
and this was it for today. Now I'll be heading back to the room and taking a peaceful nap because I'm very tired. I'm roaming around since morning. So yes, see you tomorrow. Bye.